Introduction है जी. Chapter considers vicarious liability, where an employer in the usual case is held liable for torts committed by an employee. Vicarious liability means that one person, even though otherwise not a tort feasor, is liable for a tort committed by else, is therefore an extreme strict liability. The only clear example in the of employers for the torts committed by their employees in the course of employment. अच्छा, उनका जो एक्शन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो हर जगह पे करेंगे तो उसकी लाइबल होगी. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर उसी टाइम लाइबल होगा अपने एम्प्लॉय के लिए वो जो एक्शन है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा. ठीक हो गया. It is important for us to be clear about the distinction between private liability and vicarious liability. Alongside vicarious liability for torts committed by their employees, an employer owes employees a non-delegable personal duty, that is primary liability. ठीक हो गया. नॉन डेलीगेबल मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब फिर डेलीगेट डेलीगेट नहीं कर. He has to perform his duty by himself. ठीक है, किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, ना ही उसका ये डिफेंस मान सकता है कि ड्यूटी जो है वो काम बंदे के लगाई थी. जैसे हमने वो कॉन्ट्रैक्टर वाला केस पढ़ा था, ने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने से इनकार कर दिया था कि ये तो जितना प्रोसेस था ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया. ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की. ठीक है, तो इसलिए मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उसको लाइबल ले लिया था क्योंकि ये उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है. तो वो अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा. ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक दो बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी लाइबिलिटी क्या होगी, उसके बाद हम वाइकेरियस पे जाए. Alongside vicarious liability for the torts committed by their employees, an employer owes their employees a non-delegable personal duty, that is primary liability, that arises from the employer's responsibility for the management of their organization. The employer's personal liability normally requires fault on the part of employer, whereas vicarious liability will be imposed without the claimant having to show that the employer is in any way at fault. ठीक हो गया जी. वाइकेरियस जो प्राइमरी लाइबिलिटी है उसमें आपने ये प्रूफ करना है कि इसमें जो भी लॉस सफर किया है क्लेमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की थी. ठीक है, और वाइकेरियस लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें उसने एम्प्लॉयर का फॉल्ट नहीं बताना. ठीक है, उसने एम्प्लॉय का फॉल्ट बताना है और वो एम्प्लॉयर की एंड पे जो है वो लाइबिलिटी ऐसे अक्रू होगी कि अगर वो अपना क्लेम एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है कि उसने जो लॉस सफर किया है वो दूसरे एम्प्लॉय की वजह से हुआ, तो इसको एम्प्लॉयर का फॉल्ट शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ आई है दानिश कि नहीं? क्या समझ आई? वाइकेरियस लाइबिलिटी, अच्छा अभी इसको थोड़ा सा एक दफा दोबारा पढ़ लो ताकि समझ आ जाए. Vicarious. The employer's personal liability normally requires fault on the part of employer. जहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी की बात होगी वहाँ पे बड़ा सिंपल सा है. थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ ना, एक्टिव नहीं हो आज क्लास में, किसी और जगह ध्यान गया है आज.
हम कुछ और सोच रहे, ठीक है। देखो, employer's personal liability normally requires fault on the part of employer. जहाँ पे प्राइमरी उसने आपने उसको लायबल करने लिखना है, आप liability में उसको ये शो करने की जरूरत है कि फॉल्ट था, ठीक हो गया जी। मैं वही कह रहा हूँ, एक्टिव नहीं हो, ध्यान नहीं हो, याद तो नहीं आ रहा। वो घर वाले भी याद आ सकते हैं, तो वो किसी और जगह लिख। अच्छा जी, आगे है जी, वाइकेरियस लायबिलिटी। An employer's primary liability is concerned with negligence to its employer in respect of harm suffered at work. An employer's vicarious liability is concerned with torts committed by its employees while acting in the course of employment. ठीक हो क्या जी? Before going on to consider the condition necessary for vicarious liability arise, the justification for departing from the usual fault based liability will be considered. Many different theories, fault based, based नहीं, fault based liability will be considered. ठीक हो गया जी? Many different theories have been advanced to justify the doctrine of vicarious liability, but the most accepted justifications are the benefit and burden principle. ठीक है जी? The employer has established a business and derives the economic benefits of commercial success. The employer ought therefore to be liable for damages caused by the business. ठीक हो गया? बेनिफिट एंड बर्डन प्रिंसिपल, ठीक है। अब वो ये बता रहा है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए बहुत सारी, उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये जो हम आगे फर्दर, ये जो जिन जिन के साथ एरो लगा हुआ है ना, ये थ्योरीज हैं जो मोस्टली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसमें पहली थ्योरी है द बेनिफिट एंड बर्डन प्रिंसिपल। द एम्प्लॉयर हैज एस्टैब्लिश अ बिजनेस and derives the economic benefit from of commercial success. The employer ought therefore to be liable for damage caused by the business, ठीक है। अब एम्प्लॉयर जो है उसने बिजनेस सेटअप, एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया हुआ है या एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, ठीक है। उसका बेसिक पर्पस क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में उसको बेनिफिट आएगा, ठीक है। इकोनॉमिकली उसको बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो जब वो एक उससे बेनिफिट लेने के लिए किसी को हायर कर रहा है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में ये है कि वो किसी से बेनिफिट लेने के लिए उसको हायर कर रहा है वहां पे एम्प्लॉयमेंट में, अपने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए। तो अगर वहां पे ऐसी जगह पे कोई डैमेज कॉज होता है तो एम्प्लॉयर जो है उसके लिए लाइबल है, एम्प्लॉयर उसके लिए लाइबल है, क्योंकि उसको जो लॉस हो रहा है उसके बिजनेस की वजह से हो रहा है ना, ठीक है तो वो वर्क प्लेस पे ना, जहाँ उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का उस वर्क प्लेस क्या बेनिफिट है? का इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ऐसा है ना, बेसिकली एम्प्लॉयर का बेनिफिट वो है, ठीक। तो जब वो उसका बेनिफिट ले रहा है
वर्क प्लेस पे अगर उसके एम्प्लॉय को किसी किस्म का लॉस होता है या डैमेज सफर करता है तो लायबिलिटी एम्प्लॉयर पर होगी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल कौन सा हो गया? बेनिफिट एंड बर्डन प्रिंसिपल। ठीक हो गया जी। दूसरा है जी, द एम्प्लॉयर हैज क्रिएटेड अ रिस्क एंड शुड बी आंसरेबल इफ द रिस्क मटेरियलाइजेस। एम्प्लॉयर ने वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हुई है जिसमें रिस्क और रिस्क जो है अगर मटेरियलाइज है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर लायबल है, ठीक हो गया। द एम्प्लॉयर इज इन द टू फाइंड आउट द नेचर एंड पता कि उसके बिजनेस में किस किस्म के जो है वो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें क्या खर्चे आ सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को उसी हिसाब से उनकी इंश्योरेंस भी करवानी चाहिए। ठीक हो गया जी। The employer has responsibility for ensuring that its employees are effectively trained to carry out their work. ठीक है जी, ठीक है। The employer is more likely to take staff training and supervision. The principle of vicarious liability means that the employer is more likely to be careful in selecting employees and provide incentive to encourage them to take care. सिर्फ उसका ये सारे काम करने के साथ साथ उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करे और उनको ऐसे प्रोवाइड करे और उनको इनकरेज करे कि वो इन सारी चीज़ों का, इस तरह के जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनसे अपने आप को सेफ रखें या उनसे ख्याल रखें। ठीक हो गया जी। द इफेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर बीइंग बेयरिंग द कॉस्ट इंश्योरेंस लायबिलिटी is to spread the loss as the extra cost can be passed on to the public in the form of higher. ठीक है जी। The deep pocket argument, which is based on the fact it has proved difficult to identify a test that will distinguish an employee for whom there is vicarious liability from an independent contractor for whom generally there is not. The issues are surprisingly complicated and the answer may depend on the precise contractual relationship. It is possible here only to identify the broad issues that arise. Um, इसका कौन? जियो शादी, very good. A traditional example of the distinction was that a personal chauffeur is an employee and a taxi driver is an independent contractor. ठीक है? If your chauffeur carelessly knocks a pedestrian down, you are vicariously liable. If your taxi driver does it, you are not. ठीक हो गया? This is not simply because a taxi driver is usually engaged only for a single trip. A contract of employment may be of short duration. A taxi company may be engaged on long-term basis to provide a car and driver to take someone to and from work every day. But this is unlikely to make the driver an employee of the passenger. ये मैंने कल मांगा था, आज पहुंचाया इन्होंने। जज़ाकल्लाह। सीरियसली सर कल मांगा था, आज तो मैंने मांगा ही नहीं।
नहीं, कल ये मेरा सेकंड लेक्चर। आप लोगों से जो जूनियर बैच है उनको अब ईयू पढ़ा रहा हूँ ना, जो आप लोगों को पढ़ाया था उनको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ईयू की इजी है, पर ईयू में थोड़ा सा वो ड्राई सब्जेक्ट है। मतलब आप इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं करते। जैसे आप क्रिमिनल पढ़ रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो ना, या कॉमन पढ़ रहे हो या पब्लिक, इवन पब्लिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप चीज़ें, पब्लिक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल में और कॉमन में केस लॉज इतने हैं डिफरेंट। आप सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज पढ़ते हैं, मज़ा आता है। मतलब उसमें ध्यान बढ़ जाता है, आपकी क्यूरोसिटी भी बढ़ती है, आपकी जो अटेंशन है वो भी डाइवर्ट नहीं होती। इसमें इसमें आप बोर होते चले जाते, ठीक है। टॉट टॉट में फिर थोड़ा सा आपका ध्यान लग सकता है। ईयू में तो बिल्कुल, ईयू तो इंतहा दर्जे का बोरिंग है। ईयू तो इंतहा दर्जे का बोरिंग सब्जेक्ट, खुश सब्जेक्ट, बिल्कुल ही फजूल। ईयू यार, सच्ची बताऊं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल, ठीक है। मतलब टॉट आप पढ़ रहे हैं ना, टॉट से आपको आइडिया होगा कि डेली रूटीन लाइफ में आपके साथ किस किस किस्म के जो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उनको आप अगर क्रिमिनल साइड पे नहीं लेके जा सकते, सिविल साइड पे अगर लेके जाना है, तो फिर आपने कैसे उसमें क्लेम बनाना है। टॉट आपको उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। टॉट आपका उस विजन को वास्ट कर सकता है। ईयू जो है ना, उसका लिमिटेड सा स्कोप है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। टॉट जो है वो आपको अदरवाइज बेनिफिशियल है कि यहाँ पे भी, ठीक है। तो टॉर्ट में थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट बन सकता है। अब ये देखे ना, बड़े मजे की एग्जांपल दी गई। A taxi company may be engaged on a long-term basis to provide a car and driver to take someone to and from work every day. But this is unlikely to make the driver an employee of the passenger or the passenger's employer. ठीक हो गया जी। अब वो उसने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी है कि एक आपका शॉफर है, मतलब आपका पर्सनल ड्राइवर है, ठीक है। वो आपने उसको हायर किया है और वो गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाते हुए वो किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए आप भी वाइकेरियसली लाइबल हो, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पर्सनली हायर किया हुआ है। तो ये, इसको ये इंस्ट्रक्शंस देना, उसको लोगों को उससे सेफ रखना, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आप वाइकेरियसली लाइबल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक टैक्सी ड्राइवर है, हायर तो आपने उसको भी किया है ना, एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है। वो इस तरह का एक्शन अगर करता है, तो उसके अगेंस्ट जो लाइबिलिटी, उसकी जो लाइबिलिटी है वो आपको नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती। टैक्सी जो करवाता है बंदा, उससे बात करो, ठीक है, उससे रेलेवेंट बात हो रही है, ठीक हो गया। तो क्यों उसमें कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो बहुत शॉर्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म भी हो, तब भी उसका जो रिलेशनशिप है वो इतना है कि उसने उसको अगर छोड़ने के लिए जाना है तो घर से पिक करना है और ऑफिस ड्रॉप करना है, या ऑफिस से पिक करके घर ड्रॉप कर देना। हाँ, ठीक है। तो ये, और इस प्रोसेस में ऐसा नहीं आप हो सकता कि उस ड्राइवर को आप ये कंसिडर करें कि वो आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है जी। Modern styles of working, including the so-called gig economy, such as
that of drivers and delivery personnel on 0 hours, ठीक है, contracts have now called into question the traditional distinction that the law has relied on to determine vicarious liability. There are many other contexts in which the same question has to be answered. There are different tax and national insurance and right? An employee has greater employment rights and protection. A number of cases in this section are not about liability in tort at all. Generally assume that the same test applied whatever the context in which the question arises. But there are arguments against assumption. True where the employer and employee to complicate contractual agreement for text of national ठीक हो गया जी बताएं ये सेकंड पैराग्राफ भी समझा देते हैं There are many other contexts in which the same question has to be answered. ठीक है अब मैं ये ऊपर ये रेलेवेंट है ऊपर के साथ ही ठीक है ऊपर को पढ़ लें मॉडर्न स्टाइल ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग सो कॉल्ड गिग इकोनॉमी क्योंकि गिग इकोनॉमी क्या है गिग इकोनॉमी वो होती है जिसमें आपका बहुत शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे आपके यहाँ पे फूड पांडा वाले हैं या KFC की डिलीवरी सर्विस है ठीक है बाकी सारी चीज़ों की शॉर्ट टाइम such as that of drivers and delivery personnel on 0 hours contracts, ठीक है, have now called into question the traditional distinction that the law has relied on to determine vicarious liability. ठीक हो गया कि उनका शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट है जैसे हमने टैक्सी ड्राइवर की एग्जांपल दी थी टैक्सी ड्राइवर का भी तो शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है टैक्सी ड्राइवर के साथ आपकी लाइबिलिटी नहीं बन रही तो ये जो डिलीवरी वाले हैं इनकी लाइबिलिटी कैसे अक्रू हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो है वो ये डिमांड करता है कि लाइबिलिटी तो उनकी भी होगी ठीक है तो अब उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है देयर आर मेनी अदर कॉन्टेक्स्ट इन विच द सेम क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड ठीक है ये जो ऊपर हमने सिचुएशन डिस्कस की है इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं इस तरह की और भी बहुत सारी हैं दैट हैज टू बी आंसर्ड ठीक है जिनका जवाब देना जो है वो जरूरी है देयर आर डिफरेंट टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस इम्प्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयज ठीक है एंड एम्प्लॉय हैज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंड प्रोटेक्शन ठीक है मतलब वो बेसिकली ये बता रहा है कि उनके डिफरेंट टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस इम्प्लीकेशंस हैं उनके ऊपर एम्प्लॉयज के ऊपर और एम्प्लॉय जो है वो उसके पास ज़्यादा राइट्स भी हैं और प्रोटेक्शन भी है A number of cases cited in this section are not about liability in tort at all. ठीक है जी It is generally assumed that the same tests are applied whatever the context in which the question arises, but there are arguments against this assumption. This is particularly true where the employer and employee have entered into complicated contractual agreements for tax और national insurance purposes. ठीक है जी वो कह रहे हैं कि इस चीज को कंक्लूड करना जो है वो डिफिकल्ट है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो है वो इस तरह के डिस्प्यूट अराइज होंगे या उनका टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस पर्पस जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा ठीक है जी अब कोई मुश्किल दूर हुई है
अब केस लो एग्जांपल्स में है इंशाल्लाह और मजीद कम मौजूद इन रेडी मिक्स कंक्रीट लिमिटेड वर्सेस मिनिस्टर ऑफ पेंशंस एंड नेशनल इंश्योरेंस a concrete manufacturing company introduced a scheme whereby its concrete would be transported by a team of lorry owners described as owner drivers. The agreement between the lorry owners and the company provided that they would be paid a fixed mileage rate for the service, and it also specified their employment status to be self-employed, independent contractor. Although lorry owners required to Although lorry owners were required to paint the lorries in the company's colors and wear the company's uniform, the driver owned the lorries and bore the financial risk of the enterprise. In a dispute about whether the lorry owners were employees or independent contracts, the economic reality test was applied, and on the facts of the case, it was found that the lorry owners were likely to be acting as agents or employees of the company, but were in reality independent contractors working under a contract for service. The key factor influencing the court in reaching its conclusion were that the drivers owned and maintained the lorries, were free to hire other drivers in the event of holidays or sickness, and took the chance of profit and bore the risk of loss. अब समझ आई ये कॉन्सेप्ट? इसमें कॉन्सेप्ट ये है, हमने थर्ड पार्टी कभी डिस्कस किया ना, ठीक है। थर्ड पार्टी का कैसे डिस्कस किया, हमने एक केस पढ़ा था जिसमें वो शिप जो है वो लेकर जा रहे थे और उसमें फॉल्ट था, और जो बंदा था उस जो एम्प्लॉयर था उसने उस शिप के ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था या उस सेलर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस शिप के में डिफेक्ट होने की वजह से उसके एम्प्लॉय को लॉस हुआ था। तो उसमें कोर्ट ने डिक्लेयर ये किया था कि एम्प्लॉयर जो है वो इस बेस पे अपनी जान नहीं छुड़ा सकता कि उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो उसकी एम्प्लॉय नहीं है, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉय को लॉस पहुंचा है, ठीक है। तो लिहाजा एम्प्लॉयर जो है वो उसके लिए लाइबल है, क्योंकि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी को इंश्योर करे। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट कैसे है कि कंपनी है उसने लॉरीज हायर की, ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉरी ड्राइवर्स ने उस कंपनी के लिए सर्व करना था, ठीक है। अब उन लॉरी ड्राइवर्स की कोई भी नेग्लिजेंस होगी या कोई भी उनका ऐसा एक्ट होगा जिसकी वजह से किसी को लॉस पहुंचेगा, तो क्या कंपनी लायबल होगी? यही सिनेरियो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्यों क्यों वजूहात कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से कंपनी लायबल नहीं है। अब ये इस पॉइंट को यहाँ से पढ़ना, द की फैक्टर्स, ठीक है, मैं सुनाता हूँ। द की फैक्टर्स, the key factors influencing the court in reaching its conclusion were that the drivers owned and maintained the lorries. अब वो जो लॉरीज लेकर आते थे ड्राइवर्स, वो उसके ऑनर थे उन लॉरीज के, और मेंटेनेंस भी उनके ऊपर थी, डिपेंडेंट थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, were free to hire other drivers in the event of holidays or sickness. उनके पास राइट है कि अगर वो बीमार हो गए हैं या अगर वो छुट्टी करना चाहते हैं तो अपनी जगह किसी और एम्प्लॉय को, किसी और ड्राइवर को हायर कर लें, ठीक है। और नंबर 3, took the chance of profit and bore the risk of loss, ठीक है। मतलब इस सारे सिनेरियो में उन्होंने क्या सिस्टम डेवलप किया है, बेसिकली वो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है।
वो उन्होंने चांस ऑफ प्रॉफिट लिया हुआ है, जो कि बिजनेस में होता है, या मुनाफा होता है या नुकसान होता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, टुक द चांस ऑफ प्रॉफिट एंड बोर्ड द रिस्क ऑफ लॉस। बोर्ड मीन्स कि उस बर्दाश्त करेंगे, बियर बोलते हैं ना, बियर बर्दाश्त करना है उसकी फॉर्म है। वो मीन्स बर्दाश्त करेंगे लॉस को। अब ये सारे फैक्टर्स इस चीज की तरफ निशानदेही करते हैं या इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि जब ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट कंसिडर किए जाएंगे, वो कंपनी के एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। ना लॉरीज कंपनी की है, ना वो कंपनी के ड्राइवर हैं, उनने सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक हो गया। तो मतलब वो खुद ऑलरेडी एक बिजनेस में एंगेज है और उनका उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो अगर उनके ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ इवेंट, मतलब वो ड्राइव करते हुए किसी और जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक्सीडेंट होता है या कोई उनके पार्ट में नेग्लिजेंस होती है या वो टॉर्ट कमिट करते हैं किसी किस्म का भी, तो उसके लिए वो कंपनी लायबल नहीं होती। समझ आ गई बात में? उसकी रीजन उन्होंने 3 पॉइंट में बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दी कि क्यों नहीं लायबल नहीं, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना दानिश, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसमें उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया इस बात को कि इन चीजों को डिटरमिन करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, कि किस केस में जो है वो वाइकेरियसली लायबल होगा, किस में केस में नहीं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए, वो जो हमने ऊपर पढ़े थे विद एरो, जो मैं आपको बता रहा था, जितने एरोस के साथ चल रहे हैं सब प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसमें वो हमने पढ़ा है कौन सा बर्डन प्रिंसिपल जो पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट में बेनिफिट एंड बर्डन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके साथ साथ जो चीजें हमने पढ़ी वो उन्होंने स्पेसिफिक डिफाइन कर दी हैं चीजें, लेकिन उसके बावजूद कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहां पे उसको कोर्ट को डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। There is nowadays a great variety of patterns of employment. It is not yet clear what arrangement of primary or vicarious liability can best deal with these. Here are some examples. The provisions of agency staff is common in many industries. Notably, in clerical and hospital work, bodies such as insurance companies or utility companies enter into contract with customer under which they agreed to supply. For example, plumbers deal with emergencies. ठीक हो गया जी। Independent contractors. No single test has proved satisfactory as a distinction between employees and independent contractors. Courts have referred to the extent to which the employer can control how the individual does the job. They have considered how far the individual can be said to be integrated into the business. They have adopted an impressionistic approach and have added up the features of relationship, identifying those features that were more like a contract of service, that is of employment, and those that were more like a contract for service, and consider where the balance lay. Among many illustrative cases, Cassidy versus Ministry of Health, Stevenson, Jordan, and Harrison versus McDonald and Evans, Channing LJ in Market Investigation Limited, Cook J warned against the risk of a rigid application of the factors for consideration. मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हो रही है ना, उसमें उन्होंने ये देखना है कि उसके इंटीग्रेशन कितनी है, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट या उसकी इम्प्रूवमेंट उस सर्विस में, बिजनेस को इम्प्रूव करने में कितनी है, ठीक है, एक तो ये चीज देखनी है। दूसरा इन केसेस के साथ कुक नामी जस्टिस है, वो ये कह रहा है, वार्नड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ रिजिड एप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ फॉर कंसिडरेशन, saying
No exhaustive list. Next slide. No exhaustive list has been compiled, and perhaps no exhaustive list can be compiled of the considerations which are relevant in determining that question. Nor can strict rules be laid down as to the relative weight which the various considerations should carry in particular cases. मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना ही रूल्स कंपाइल कर सकते हैं कि किन किन बेसिस पे आप उनको जो है वो वाइकेरियसली लायबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किन किन केसेस पे नहीं कर सकते. So that should vary from case to case or the facts of the case or the circumstances. ठीक हो गया जी. उसके अकॉर्डिंगली ही कोर्ट जो है वो इसको डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट हेड है जी हमारा रिलेशनशिप एकिन टू एम्प्लॉयमेंट. इट मींस सिमिलर टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक हो गया जी. द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिलेशनशिप की बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट और में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो है ही. उसमें हमने की फैक्टर्स पढ़े हैं कि उसमें एम्प्लॉयर का जो है वो बिजनेस होगा, उसको बेनिफिट होगा, और एम्प्लॉय जो है वो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा, वो उसकी सुपरविजन में उसके अंडर काम कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी. अब ये वहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह का सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता उन दोनों के दरमियान में, लेकिन उसके बावजूद भी जो बंदा है लाइबल है. हाँ, ठीक है. वो मैं अब हम इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से वो लाइबल होगा. ठीक हो गया जी. द क्वेश्चन ऑफ वेदर द कैथोलिक चर्च is the employer of its clergy was considered in JHE. क्लर्जी जो होता है उनके जो क्या कहते हैं रिलीजियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. या उसका जो बेसिकली क्लर्जी जो है वो उसका स्टाफ जो होता है ना चर्च का, उसको बोला जाता है. ठीक है. JGE वर्सेस पोर्ट्समाउथ रोमन कैथोलिक डायसीजन ट्रस्ट. The church claimed that the priests are not employees of the church. ठीक है. They are merely office holder and not employees. The priest accused of church का ये claim है, जो priest है ना जो वहाँ पे इबादत का काम करते हैं, वो सारे मामलात करते हैं, वो एम्प्लॉय नहीं है चर्च के. ठीक हो गया. हाँ हाँ, चर्च का क्लेम ये है इस केस में. ठीक है कि वो हमारा एम्प्लॉय. The priest accused of sexual abuse had no employment contract with the trustee. मतलब जो इसमें प्रीस्ट था जो एक्यूज है सेक्सुअल अब्यूज का, ठीक है, उसका कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ट्रस्टीज के साथ, जो चर्च के ट्रस्टीज हैं उनके साथ. ठीक है. देयर वाज नो वेज एग्रीमेंट, और उनके दरमियान कोई तनख्वाह से रिलेटेड भी कोई एग्रीमेंट नहीं है. नो मैकेनिज्म फॉर द ट्रस्टीज टू डिसमिस और डिसिप्लिन हिम, एंड नो मैकेनिज्म मतलब जो ट्रस्टीज हैं चर्च के, उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको प्रीस्ट को वो डिसमिस करें या प्रीस्ट को वो डिसिप्लिन करें. एंड नो मैकेनिज्म बाय विच दे कुड कंट्रोल हिम. ठीक है. और उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू वो उसको कंट्रोल कर सके. द कोर्ट ऑफ अपील upheld the first instance finding that the relationship, मतलब जो नीचे से डिसीजन हुआ था वो कोर्ट ऑफ अपील ने भी अपहेल्ड किया, मतलब उसी को ही एंडोर्स किया, उसी को ही माना हुआ है. ठीक है जी. उसमें क्या कह रहे हैं? फाइंडिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन अ पैरिश प्रीस्ट एंड डायोसी वाज akin to an employment relationship. ठीक है. अब ये पैरिश और डायोसी जो है ना, ये डिफरेंट आप समझ रहे हैं उनकी कैटेगरीज हैं. ठीक है. और उसमें ये कह रहे हैं कि वो उनका भी जो रिलेशनशिप है, उनकी जो अथॉरिटीज हैं या उनका जो मोड ऑफ वर्क है, ठीक है, दैट इज एकिन टू सिमिलर टू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इवन दो द प्रीस्ट रिसीव नो वेज, अगर वो वेज रिसीव नहीं करता तब भी, एंड वॉज रेयरली सुपरवाइज, और उसको किसी किसी टाइम जो है वो सुपरवाइज किया जाता है. व्हेन कंसिडरिंग वाइकेरियस लायबिलिटी in respect of persons not formally employed,
उन उन लोगों के हवाले से बात हो रही है जो लोग जो हैं वो फॉर्मली एम्प्लॉयड नहीं होते, जैसे बाकी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट या हायरिंग की जाती है, फॉर्मली एम्प्लॉयड नहीं है। द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू अप्लाई टेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेट डाउन इन केसिंग डीलिंग विद द अनफेयर डिसमिसल, ठीक है, और टैक्सेशन और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक हो गया जी। वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अगर आप वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करना शुरू कर दें जो आप जनरल सेंस में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अनफेयर होगा। ठीक हो गया, आप उसको उस तरह नहीं कर सकते। तो और ये जो केसेस जो हैं वो जिनमें आप अनफेयर डिसमिसल और टैक्सेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे होते हैं, उनके साथ अगर आप इसको लिंक करना शुरू कर दें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको एक चीज मिलेगी कि कोर्ट्स जो हैं वो पॉलिसी डिसीजन का भी ख्याल करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बंदा जो है वो चर्च में बैठ के किसी बच्चे को या किसी को कुछ सेक्सुअली अब्यूज करता है तो उसके बाद उसके ऊपर, अच्छा वो है भी चर्च का मेंबर ही, ठीक है, तो उसके बाद आप सिंपल एम्प्लॉयमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करके इस चीज से चर्च जो है वो अपनी लाइबिलिटी जो है वो रिमूव कर लेगा कि क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है और हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है या हम इसको कंट्रोल नहीं करते, लिहाजा हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं। तो कोर्ट ये कह रहे हैं कि चर्च जो है फिर भी वाइकेरियसली लाइबल है उसके एक्ट के लिए या द टॉर्ट कमिटेड बाय हिम। ठीक हो गया जी। अब समझ आ गई ये चीज किन सेंसेस में वो एप्लीकेबल है। इन वेरियस क्लेमेंट्स वर्सेस the Catholic Child Welfare Society, hereafter referred to as CCWS, the Supreme Court held that the law of vicarious liability has developed recently to establish a number of important propositions. One of which is that it is possible for unincorporated associations, such as the Institute, to be vicariously liable for the wrongful acts of its members. मजाक की बात की कि जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो रिसेंटली डेवलप्ड हुआ। जब ये केस था उस टाइम की बात हो रही थी कि वो रिसेंटली डेवलप हुआ और अभी उसमें डिफरेंट प्रोपोजिशंस जो हैं वो आ रही हैं, इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहे हैं और उसमें से एक ये है कि it is not possible for unincorporated it is possible for unincorporated associations such as the institute to be vicarious liable for wrongful acts of its members। ठीक है, कि जैसे अब हमने ऊपर देखा वो एम्प्लॉयर नहीं था लेकिन वो मेंबर तो है चर्च का, ठीक है, तो इसलिए वो लाइबल हुआ। इसी तरह यहाँ पे वही इन CCWS the Supreme Court reviewed the law of vicarious liability in cases involving sexual abuse of children where bodies, in pursuance of their own interest, cause their employees or person in a relationship similar to that of employees, ठीक हो गया जी, to have access to children in circumstances where abuse has been facilitated. The court said that the approach to establishing vicarious liability involves a synthesis of two stages. Two stages हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझने की जरूरत ये है कि जहां पे कोई भी ऐसा अनइनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन भी होगा बेशक, ठीक है, अगर वो किसी को वहां पे कोई अथॉरिटी देता है और उसका रिलेशनशिप वो फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है, लेकिन अगर उसकी एक्सेस है किसी ऐसी चीज की तरफ जिससे कोई टॉर्ट कमिट हो सकता है, तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो उसके लिए लाइबल होगा, वाइकेरियसली इंस्टीट्यूट भी लाइबल होगा। अब जैसे इस केस में सेक्सुअल अब्यूज हुआ एक बच्चे के साथ, ठीक है, तो जिस बंदे ने किया उसको भी चर्च ने डिसऑन किया कि ये तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है तो हम कैसे लाइबल होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं या उसको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है, तो आप लाइबल हैं क्योंकि आपने सिक्योरिटी भी उनकी मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया जी। अब टू स्टेजेस के हैं जी, उसको देख लेते हैं आगे। द स्टेज वन क्वेश्चन आस्क whether the relationship between the employee and the employer or relationship akin to that employment was one rise to vicarious liability।
ठीक है जी। A Lord will set out 5 conditions that would help to address this first stage। ठीक है जी। पहले स्टेज में वो ये बात कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, और रिलेशनशिप एकिन टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू एम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने वो चैट वाली एग्जाम्पल देखो, दानिश इसको समझना, जो एकिन टू एम्प्लॉयमेंट की टर्म यूज हो रही है वो इसलिए यूज हो रही है कि जो जनरल प्रिंसिपल है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो तो हमें बड़ा क्लियर है कि अगर एम्प्लॉय की तरफ से कोई ऐसा एक्ट होता है किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए जो टॉर्ट कमिट करता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर जो है वो वाइकेरियसली लायबल है। लेकिन यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जहाँ पे सिमिलर होगा दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, वहां पे भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। ठीक हो गया जी। उसमें 5 कंसिडरेशंस क्या है लॉर्ड फिलिप्स की, वो देख लेते। ये है जी, द एम्प्लॉयर इज मोर लाइकली टू हैव द मींस to compensate the victim and can be expected to have insured against that liability। ठीक हो गया जी। पहला आ गया जी, the tort will have been committed as a result of activity being taken by the employee on behalf of the employer। ठीक हो गया जी। समझ आ गए दोनों पॉइंट्स दानिश? एक दफा देख लो, को मुश्किल है तो बता दूं मैं। नहीं, ये देखो, आपने इसको अंडरस्टैंड दोनों पर्सपेक्टिव में करना है। मैंने इसलिए ऊपर एक्सप्लेन किया कि इसमें वो ये बात ये कर रहा है ना, एक इन टू, ये जो आप पहला पॉइंट पढ़े ना खुद से, आपको ताकि समझ आए। नहीं, स्टेज 1 वाला स्टार्ट से जी, ऊंचा पढ़ना है, कोई मसला नहीं। ठीक है, हो गया। मतलब दोनों पे एप्लीकेबल है, एक पे नहीं, दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, जहां पे वाइकेरियस लाइबिलिटी हो एक्रू हो जाएगी, वहां पे इन दोनों कंडीशन पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ठीक है जी। पहला है जी, द एम्प्लॉयर इज मोर लाइकली टू हैव द मींस to compensate the victim and be expected to have insured against that liability। ठीक है, पहली रीजन क्या है एम्प्लॉयर को लाइबल डिक्लेयर करने की, कि जो एम्प्लॉय है या सिमिलर टू एम्प्लॉय है, ठीक है, वो उससे ज्यादा कैपेसिटी एम्प्लॉयर की है पे करने की, कंपनसेट करने की। ठीक हो गया। और एम्प्लॉयर ने फॉर ऑब्वियस रीजन उस टॉर्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई इंश्योरेंस भी करवा रखी होगी। ठीक है, तो लिहाजा उसकी कैपेसिटी उस एम्प्लॉय से ज्यादा है कंपनसेट करने की। ठीक हो गया। द टॉर्ट विल हैव बीन कमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी बीइंग टेकन बाय द एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। अच्छा, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि एम्प्लॉय तभी लायबल होगा जब वो टास्क वो पूरा कर रहा होगा जो उसके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ उसको। ठीक हो गया जी। The employee's activity is likely to be part of the business activity of the employer। सेम चीज होगी आगे जी। The employer, by employing the employee carry on the activity, will have created the risk of tort committed by the employee। ठीक हो गया जी। अब वो उसने उसको एज एन एम्प्लॉयर हायर किया है, ठीक है, तो उसी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को मेक श्योर करना कि वो जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी वर्क प्लेस पे ना करे जिससे टॉर्ट कमिट हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉयर ने ये बियर रिस्क खुद बेयर किया है, तो लिहाजा वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ई है जी, द एम्प्लॉय विल टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री हैव बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल। एम्प्लॉय जो है फॉर ऑब्वियस रीजन ज्यादा हो या कम हो, वो अपने एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है। ठीक हो गया जी। द स्टेज 2 क्वेश्चन एड्रेसेस द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट test and ask if the connection between the employer and the
perpetrator, the acts of abuse, and the extent to which the employment created or significantly enhanced the risk of that abuse, the necessary close connection was established in CCWS. ठीक है, CCWS हमने ऊपर पढ़ ली है, ठीक है, वो है जी चाइल्ड कैथोलिक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक हो गया जी, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल कौन सा लेट डाउन किया, क्लोज कनेक्शन वाला, ठीक हो गया जी। In Cox versus Ministry of Justice, the claimant had worked as the catering manager at a prison. She suffered injury as the result of negligence of a prisoner performing paid work under the claimant's supervision. In one of the first decisions applying the Supreme Court ruling in CCWF, the Court of Appeal held that in determining whether an employment relationship for the purpose of vicarious liability existed, it was necessary to ask whether the relationship between the claimant and the ministry was one akin to employment. The Court of Appeal applied the relevant features identified in CCWF and held that it was clear that those features distinctly applied in this case. The defendant's arguments that, unlike employees, prisoners have no interest in furthering the objective of the prison service was rejected. A prisoner undertaking useful work for normal wages binds him into a closer relationship with the prison service than would be the case for an employee and strengthen rather than weakens the case for imposing vicarious liability. ठीक हो गया जी? In Cox, the Supreme Court considered the sort of relationship which has to exist between an employer and an employee before the employer can be made vicariously liable. ठीक हो गया जी? The companion appeal of Muhammad and Morrison supermarkets consider how the conduct of employee has to be related to that relationship for vicarious liability to be imposed. In Ames versus Nottinghamshire County Council, the Supreme Court again considered relationship akin to employment. The question in arms was whether a local authority was vicariously liable for the physical and sexual abuse perpetrated by the foster parents into whose care they placed the claimant when she was 7 years old. The case proceeded on the basis that there was no social workers involved with placing the claimant with the foster parents or in the supervision and monitoring of the placements. Nevertheless, the claimant argued that the local authority should be vicariously liable for their wrongful acts of abuse. At first instance, the trial judge rejected vicarious liability on the ground that the local authority has no relevant control over the foster parents as to the manner in which, on a day-to-day basis, the foster parents provided family life to the child. The Court of Appeal affirmed the judge's decision, and the matter was then referred to the Supreme Court to consider whether the relationship between a local authority and foster parents fulfilled the criteria for vicarious liability. In ruling that the local authority was vicariously liable for the abuse committed by the foster parents, एक मिनट सर मुझे देना कॉल उस पर कनेक्टेड है ना In ruling that the local authority was vicariously liable for the abuse committed by the foster parents, Lord Reed, with whom Lady Hale, Lord Kerr, and Lord Clark agreed, applied the principle set out in Cox versus Ministry of Justice
The general principles governing the impositions of vicarious liability were recently reviewed by this court in Cox versus Ministry of Justice. As was said there, the scope of vicarious liability depends upon the answers to two questions. First, what sort of relationship has to exist? Relationship has to exist. जी ठीक है ये रिलेशनशिप हैज जो है इकट्ठा हुआ है ठीक है जी relationship has to exist between an individual and a defendant before the defendant can be made vicariously liable in tort for the conduct of that individual. Secondly, in one matter, does the conduct of that individual have to be related to that relationship in order for vicarious liability to be imposed? The present, like the case of Cox, is concerned only with the first of those questions. ठीक हो गया क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेंगे आपने फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई भी वाइकेरियस लायबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं पहला है व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप हैज टू एग्जिस्ट between an individual and a defendant before the defendant can be made vicariously liable in tort for the conduct of that individual. ठीक है उसमें वो जो CCWS में प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था क्लोज कनेक्शन वाला उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको एस्टैब्लिश करना जरूरी है ठीक है तो दूसरा है सेकेंडली इन व्हाट मैनर डज द कंडक्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल हैव टू बी रिलेटेड टू दैट रिलेशनशिप और उस इंडिविजुअल का जो कंडक्ट है उस रिलेशनशिप के साथ उसका कनेक्शन कैसे आपने एस्टैब्लिश करना है ऑर्डर फॉर लाइक वाइकेरियस लायबिलिटी ठीक हो गया जी अब समझ आ गई article vicarious liability in the Supreme Court in the UK Supreme Court yearbook volume so and so Professor Paula Glicker comments one is left to wonder where after 3 Supreme Court decisions in 4 years this leaves the legal development of the doctrine of vicarious liability. In Arm, the Supreme Court was being asked to develop the law beyond the point which it had already reached and disagree with the conclusion reached in the courts below. The majority ruling in favor of vicarious liability, Lord Hughes dissenting endorses Clicker's prediction that Cox and Muhammad are far from the end of this story. अगला केस है जी बार्कले बैंक पीएलसी versus various claimants. In Barclay Banks PLC, various claimants versus various claimants, the Court of Appeal held that the defendant bank was vicariously liable for the sexual assaults against prospective staff committed by a doctor who was an independent contractor. It reached this conclusion by applying the Lister close connection test and Lord Phillips' 5 criteria established in CCWS to establish the employment relationship. However, in Barclays Banks PLC versus various claimants, the Supreme Court allowed the appeal by the defendant bank. The 5 factors identified in CCWS decision may help to identify a relationship analogous to employment, where it is not clear whether or not the tortfeasor is carrying on their own independent business. However, where it is clear that the tortfeasor was carrying out his own independent business, it was not necessary to consider the 5 criteria. The Supreme Court pre-established what is effectively an independent contractor defense. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस का केस जो है वो जो हमने स्टार्ट में लॉरीज वाला पढ़ा था वो बड़ा सूटेबल है ठीक हो गया और इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने में बहुत कन्वीनियंट रहेगा वो ठीक है जी अगला है जी इसमें वही प्रिंसिपल अप्लाई किया हमने लॉरीज वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया और बैंक की जो अपील है वो अलाउ कर दी थी
और उनकी लाइबिलिटी जो है वो कोर्ट ने एग्जेम्प्ट कर दी थी। क्या चीज? वो केस चलता रहा होगा ना, तो केस चलता रहा होगा ना, और वो पहले जो केस है वो आप ट्रायल स्टेज पे होगा, दूसरा जो है वो अपील स्टेज पे है। ठीक हो गया। Borrowed employees. There is a particular problem with borrowed employees, where, for example, one company supplies a crane and its driver to work for another company. It is plain that the driver remains an employee, but of which company? The presumption seems to be that the driver remains the employee of the lending company, unless this is clearly displayed on the facts. In Mercy Docks and Harbour Board versus Scoggins and Griffith Limited, a contract which stipulated that the driver was to be the employee of the stevedores. In spite of this term, the employee's original employer, the Harbour Board, paid his wage and retained the right to dismiss him. The hirer, Coggins and Griffith, directed the tasks which were to be performed by the driver, but not how he was to operate the crane. ठीक हो गया जी? In the course of his work, the driver negligently injured the plaintiff, and the question to be determined was whether the firm of stevedores or the Harbour Board were vicariously liable. In holding the Harbour Board liable, the House of Lords said the control test was still important. ठीक हो गया जी? They noted that the factors such as the type of machinery that had been loaned, the more complicated it is, the more likely the main employer will remain liable. And factors such as who pays the employees, national insurance contribution, and the duration of alternative service with the temporary employer are also relevant. ठीक हो गया जी? अब इसमें उन जो कंपनी जो लैंड कर रही है उसके पास पावर्स हैं, उन्होंने उसको गाड़ी दे दी, उन्होंने उनको ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया। अब उस बंदे ने काम कैसे करना है ये बताना है बोरोइंग कंपनी ने। ठीक हो गया? और बोरोइंग कंपनी अगर किसी पॉइंट पर लैग करती है और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई टॉर्ट कमिट होता है तो कौन लायबल होगा? लेंडिंग कंपनी और बोरोइंग कंपनी। बोरोइंग कंपनी, लेंडिंग कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है? उस बिजनेस उस सर्विस को यूज कैसे करना है ये बोरोइंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? देयर कैन बी डुअल वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है? मतलब बोरोइंग कंपनी भी होगी लाइबल और लेंडिंग भी होगी। ठीक है? It had traditionally been assumed that where an employee was lent by one employer to work for another, vicarious liability for the employee's negligence had to rest with one employer or other, but not both. However, in Via Systems Limited versus Thermal Transfer Limited, the Court of Appeal held that it is possible for two separate employers to be vicarious liable for the tort of single employee. 26 स्लाइड है जी हमारी, इसको आगे कर दें। द एम्प्लॉय मस्ट कमिट अ टॉर्ट। इसमें एम्प्लॉय कहाँ पे बात हो रही है? कौन से एम्प्लॉय की बात हो रही है? जो एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय को इंजर करेगा। वाइकेरियस लाइबिलिटी में हमने प्रिंसिपल पढ़ा है ना कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कोई लॉस सफर करवाएगा, कोई इंजरी सफर करवाएगा,
तो उसके लिए उसका एम्प्लॉयर लाइबल होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय की बात हो रही है जिसकी वजह से दूसरा एम्प्लॉय इंजरी सफर करेगा, या टॉर्ट ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कमिट करेगा जिसके ब्याह पे दूसरा एम्प्लॉय सफर करेगा। ठीक हो गया जी। द एम्प्लॉयर इज लाइबल वाइकेरियसली only if the employee has committed a tort. That means that the employer can take advantage of any substantive defense available to the employee, such as contributory negligence or voluntary non-fit injury. ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक में दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या थी जी? ठीक है। और वॉलंटी नॉन फेट इंजूरिया क्या था? वॉलंटी। हाँ, ये प्रिंसिपल लैटिन में है, इसका क्या मीनिंग था? कंसेंट। ठीक है जी। जहाँ पे किसी हार्म के लिए वो कंसेंट कर रहा हो। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर के जहाँ पे हमने डिफेंसेस पढ़े हुए हैं उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि उसके कौन कौन से डिफेंस, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक वारंटी नॉन फेट इंजूरी। ठीक हो गया जी। कंसेंट, ये लैटिन टर्म है ना बेसिकली जो यूज हो रही है कंसेंटिंग। ठीक है, कंसेंट को माइंड में रखना है। ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कह रहे थे? In ICI Limited versus Chatwell, in defiance of his employer's orders and statutory safety regulations, the plaintiff went to test some detonators without taking the required safety precautions. The employer was not liable for the injury sustained when an explosion occurred because the plaintiff was held to have consented to and fully appreciated the risk of injury. ठीक है जी। अब इसमें सिनेरियो ये था कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय था और वो विदाउट एम्प्लॉयर्स ऑर्डर्स और जो उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड थी उनको उसने फुलफिल किए बगैर, ठीक है, डेटोनेटर्स को टेस्ट करने के लिए गया और जहाँ पे जो है वो ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से जब उसने इंजरी सस्टेन की तो उसने अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट टॉर्ट का क्लेम फाइल किया जो कि कोर्ट ने डिसऑन किया या डिसमिस किया, क्योंकि उसने खुद अपने कंसेंट से और सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लेते हुए सारे काम किए थे। तो लिहाजा अगर उसने ऐसा कोई काम किया विलिंगली वॉलंटरली तो उसके लिए उसका एम्प्लॉयर लाइबल नहीं हो सकता। ठीक है जी। Here the plaintiff and his brother who actually caused the explosion were quite senior safety officials and personally responsible for compliance with the regulations. It is therefore a fairly extreme case and not likely to be a general precedent. ठीक है जी। नेक्स्ट हेड है जी, द टॉर्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि जो भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अपना क्लेम लेके जा रहा है तो उसकी जो इंजरी है या उसके साथ कोई टॉर्ट कमिट हुआ है वो वर्क ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। मतलब ऑफिस में अगर काम करता है या किसी फील्ड में काम करता है, ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ वर्क उसके साथ वो एक्ट या उसके साथ वो टॉर्ट परफॉर्म होना चाहिए। अगर उस टाइम स्पैन से हट के उसके साथ कोई टॉर्ट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉय वो सेम कंपनी के हैं और वो मिलते बाहर हैं और दूसरा एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ जो है वो कोई टॉर्ट कमिट करता है तो उसके लिए आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते थे कि ये इसका एम्प्लॉयर भी इसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ी सिंपल इसके हेड से बड़ा क्लियर है कि द टॉर्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो सारे मामला होने चाहिए। नहीं, ठीक है, देखें उसमें ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात हो रही है, उसमें उसके एम्प्लॉयर का तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड की जाती है फिर वो वाइकेरियसली लाइबल हो सकता है। अगर
उस बस का ड्राइवर जो है वो नेग्लिजेंटली या क्या कहते हैं वॉलंटरली कोई ऐसा एक्ट करता है जो हार्मफुल होता है उसके पैसेंजर्स के लिए, तो वो जो बस होगी, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसके वो एम्प्लॉय हैं, जिनको वो लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल होगा। लेकिन आप खुद किसी जगह से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जा रहे हैं, उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे लायबल डिक्लेयर करेंगे? ठीक हो गया? हाँ, मिसाल के तौर पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो जहाँ आप काम पे रहे हैं और आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें आपके एम्प्लॉयर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, तो ये चीज है। This proportion is rather obvious, but it has proved difficult to identify a test that will distinguish between those torts that do occur in the course of employment and those that do not. ठीक है, अब वो यही कह रहा है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टॉर्ट जो है वो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और कौन सा नहीं हुआ उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, और फिर भी एम्प्लॉयर जो है वो वाइकेरियसली लायबल होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो डिस्टिंग्विश करना है या इनको डिफरेंशिएट करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ केसेस में। ठीक है जी। द मॉडर्न टेंडेंसी ऑफ द कोर्ट्स seems to be in borderline cases to lean in favor of imposing vicarious liability if that is possible. According to Beaker, the generous approach to the vicarious liability framework established by the Supreme Court in CCWS is justified because it creates a fairer and more workable test that enables innocent victims to obtain compensation। हाँ लगा लें, लेकिन वही मैंने आपको जो समझाया उसका ध्यान करें, क्योंकि उन्होंने वो है, लेकिन उन्होंने मुझे कल कहा है ना सर प्लीज़ आपसे ये आपने इस चीज़ का इंश्योर करना है कि बच्चे क्लास में मोबाइल ना लें, और अगर वो लाएं तो वो आपके पास जमा करवा दें। In innocent victims to obtain compensation, albeit at the expense of innocent employers। ठीक हो क्या जी? The Salmon test. The test set out by Sir John Salmon in Salmon and Houston on the law of tort, first published in 1953, has been commonly used by the courts. A master is liable even for acts which he has not authorized, provided that they are so connected with acts which he has authorized them that they may be rightly regarded as modes, although improper modes of doing them। मतलब कोई भी एक्ट है जो उसने ऑथराइज किया हुआ है या नहीं ऑथराइज किया हुआ, नहीं भी ऑथराइज किया हुआ, तो वो जो टास्क है उसकी कंप्लीशन में अगर वो एक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। ठीक हो गया जी? एग्जाम्पल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, इलस्ट्रेशन नीचे दी हुई है केसेस की। ठीक है, एन एक्ट विल बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द टेस्ट if it is a wrongful act authorized by the employer, ठीक है, b a wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by the employer। ठीक है जी, आगे है जी, द एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग केसेस। इसमें जनरल अप्रोच है जी। In Century Insurance Company Limited versus Northern Ireland Road Transport Board, a tanker driver who, while delivering petrol, lit a cigarette and carelessly discarded a match, causing a fire, was held to be acting within the course of his employment. It was said that the act of lighting a cigarette, while not in itself connected with his job, could not be looked at in isolation from the surrounding circumstances। ठीक है, अगर वो ड्राइवर टैंकर ड्राइव कर रहा है
और वो ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, तो अगर वो उस उसका सिगरेट जलाना जो है उसकी जॉब के साथ कनेक्ट नहीं होता। समझिए बात को, मतलब अब ये उसका एक्ट, उस एम्प्लॉय का वो एक्ट है, ठीक है, जो उसको ऑथराइज नहीं है, ठीक है, या उसकी ड्यूटीज में नहीं है ये। अब सिगरेट जलाना किसी की ड्यूटी में तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो उसका जो वो एक्ट है उसके लिए उसका एम्प्लॉयर भी लाइबल है। मजा ही बात की, उससे जो लॉस सफर के करेंगे सराउंडिंग्स के लोग, ठीक है, या अगर उस ड्राइवर के साथ कोई एक हेल्पर भी है उस गाड़ी में, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय हुआ, जैसे वो टैंकर का ड्राइवर एम्प्लॉय है इस तरह वो भी एम्प्लॉय है, ठीक है। अगर उस टैंकर को आग लगी, उससे उस जाहिर सी बात है जो हेल्पर होगा उसको भी नुकसान पहुंचेगा, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर लाइबल है। और उस एक्ट की वजह से किसी और को लॉस पहुंच रहा है, जाहिर है टैंकर को आग लगेगी, धमाका होगा तो और लोगों को भी नुकसान होगा, और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए भी एम्प्लॉयर लाइबल है। अब समझ आइए कि कौन से अनऑथराइज एक्ट हैं। ठीक हो गया जी। इन जनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्सेस किंगस्टन एंड सेंट एंड्रयू कॉर्पोरेशन, firemen operating a go-slow policy who work 5 times as long as they normally would have done to drive to the scene of a fire were acting not within the course of employment. ठीक है जी। The Privy Council indicated that it was as though they had simply ignored the call, which would not be a mode of performing their duties. This is, however, a case which found itself firmly on the Salmon test and holds that a wrongful and unauthorized act is outside the course of employment. ठीक हो गया जी। Continuation है Lister versus Hesley Hall Limited. The House of Lords said that the proper approach to the course of employment is no longer to ask the question whether the acts or modes of doing authorized acts in the course of employment. In CCW's law, Lord Phillips noted that although the test of close connection is approved by all, it tells nothing about the nature of the connection. ठीक हो गया जी। क्या चीज? नहीं, ये प्रिंसिपल बेसिकली प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए, फैक्ट नहीं डिस्कस किया। ठीक हो गया जी। प्रिंसिपल उसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है क्लोज कनेक्शन में। ठीक है। Frolics and detours. The employer is not liable where the employee's act is wholly unconnected to the job for which they are employed. एक मिनट। The employer is not liable where the employee's act is wholly unconnected to the job for which they are employed. In such circumstances, the employee is said to be on a frolic of his own. ठीक है जी। For instance, in Beard versus London General Omnibus Company, the employer of a bus conductor who, in the absence of the driver, negligently drive the bus himself was held not liable. ठीक हो गया जी। फ्रॉलिक्स क्या है? ये सवाल ही नहीं किया दानिश। फ्रॉलिक्स बेसिकली ये होते हैं कि जिसमें आप ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कोई किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं।
मतलब मेजर डिपार्चर ले लेते हैं, किसी और तरफ निकल जाते हैं। डिटूर क्या है? ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आप छोटे मोटे दूसरे काम कर लेते। ठीक हो गया जी। जैसे आपने ड्यूटी परफॉर्म करते हुए साथ साथ सिगरेट लगा ली, ठीक है, ड्यूटी परफॉर्म करते हुए साथ साथ बर्गर खा लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसी, ठीक है। तो वो छोटे छोटे से डिटूर्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉलिक क्या है कि आप बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते। ठीक हो गया जी। डिटूर जो है ना, डिटूर्स हैं, आप थोड़ी देर के लिए डिविएट हो गए अपने टास्क से, ठीक है, छोटे छोटे से आपने डिपार्चर्स ले लिए। जो फ्रॉलिक है ना, वो मतलब है कि आप बिल्कुल ही उस ड्यूटी के टोटली अगेंस्ट चले गए। तो जहाँ पे फ्रॉलिक की सिचुएशन होगी ना, वहाँ पे जो है एम्प्लॉय जो है उसका वो इट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें एम्प्लॉयर जो है उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ। A number of cases have dealt with an employee who has deviated from the course of employment. Deviate means कि अपनी ड्यूटी से हट जाना, ठीक है। Was the deviation sufficient to take the employee out of the course of employment? अब ये भी मैं देखना जरूरी है कि जो उसका डिटूअर था वो इस चीज को प्रूव करने के लिए काफी है कि वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हट गया था, ठीक है। The defendant's employees had been entrusted to deliver wine and to bring back some empty bottles to the employer's office. On the return journey, one of the employees persuaded the other that since it was by then after hours, they should set off in a different direction to visit some relatives. The employer was not liable for an injury caused by the employee because at the time of the accident, the driver was not acting in the course of employment. He was on a new and independent journey which was entirely for his own business. अब समझ आई फ्रॉलिक क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब ड्यूटी उन्होंने वो अपने परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो उसने कहा कि जी क्योंकि हम आफ्टर आवर्स में मतलब कि ड्यूटी से हट के टाइम में जा रहे हैं तो हम अपने किसी रिलेटिव को मिलते हुए चले जाते हैं। अब वो जब उसने रिलेटिव को मिलने का इरादा कर लिया तो वो अपनी ड्यूटी से हट गया, टोटली दूसरी साइड पे निकल गया, ठीक है। तो उसमें उस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ। अब जो इसका एक्सीडेंट है उसने अपने एम्प्लॉयर को उसके लिए लाइबल डिक्लेयर करने की कोशिश की, ठीक है, और कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की है। क्यों? क्योंकि उसका जो ये डिविएशन थी फ्रॉम हिज ड्यूटी, ठीक है, वो उसका वॉलंटियर एक्ट था और उसका उसकी जॉब से उसकी एम्प्लॉयमेंट से कोई कंसर्न लिंक नहीं था। ठीक हो गया जी। अब समझ आ गया फ्रॉलिक और ड्यूटूअर्स का मतलब। ड्राइविंग टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, अब आपके सवाल का जवाब। जनरली एन एम्प्लॉय इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ड्राइविंग टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, मतलब जा रहा हो काम पे या आ रहा हो, ठीक है, दैट वुड नॉट कंसिडर एज द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया जी। आपने जो सवाल किया था आगे चल रहे हैं, चल। But there are exceptions depending on the nature of the job and particular contractual agreement. तो क्या जी exceptions आ गई। In Smith versus Stages, a lagger was working at a peripatetic lagger was working at a power station when his employer sent him and another employee to perform an urgent job in another part of the UK. In addition to their hourly rate, they were paid traveling expenses for the journey there and back। ठीक है, मतलब वहां पे जाने आने का खर्चा, TADA जिसको आप बोलते हैं। They were using a private vehicle and had discretion as to how when they would travel। प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे थे लेकिन उनके पास इस चीज की डिस्क्रेशन मौजूद थी कि वो प्राइवेटली जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जिस तरह मर्जी जाएं, ये उनकी अपनी डिस्क्रेशन है। ठीक है। They worked without sleeps to get the job finished 2 days early and decided to drive straight home।
As they were traveling back together in the car, they were both injured when the employee driving the car crashed into a wall. The driver was uninsured and the plaintiff sued the employer on the basis of vicarious liability. The House of Lords found the employers liable. ठीक हो गया जी. Lord Gough said the fact that men were traveling back early was immaterial, since they were still being paid wages to travel there and back. Lord Lorry thought the crucial point was that the employees were on duty at the time of accident. समझ गए सर? परेशानी दूर हुई थोड़ी सी? An employee traveling between home and work will not generally be in the course of employment. However, an employee traveling in the employer's time from home to a workplace other than the regular workplace or between workplaces will be within the course of employment. ठीक है. ठीक है. आप मिसाल के तौर पे ऑफिस जा रहे हैं, वो आप कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, या आ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जो है फिर आपको भेज देता है कि यार आप चले जाएं फलानी जगह पे, वहाँ से कोई चीज़ उठा के लिए. अगर आप वो काम करने जा रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर एज द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और उस दौरान आपके साथ अगर कुछ होता है तो योर एम्प्लॉयर वुड बी वाइकेरियसली लायबल. यार मैंने स्टार्ट में ना ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जब टॉर्ट का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था ना, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं और ये इसमें सज़ा नहीं होती, इसमें होता है फ़ाइन. ठीक है. टॉर्ट में बेसिकली जो आपके पास रिलीफ है या रेमेडी अवेलेबल है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ फाइन. ठीक है. मॉनिटरी टर्म्स में आपको कंपनसेट किया जाता है, इन अदर वर्ड्स. ठीक है. पैसों की मद में आपको कंपनसेट किया जाता है. तो ये इसमें जो कंपनसेशन है ना दानिश, वो मिलती है उस सूरत में जितना आप लॉस सफ़र करेंगे उतनी आपको कंपनसेशन मिलेगी. जितना ज़्यादा आप इंजरी सफ़र करेंगे उतनी ज़्यादा कंपनसेशन होगी. फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे आप उसको कहते हैं कि फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल का नाम दे दें. ठीक है. कि अगर मिसाल के तौर पे आप ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप जो है वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं. ठीक है. आप माजूर हो जाते हैं उसमें. ठीक है. तो फिर उसमें कोर्ट ने ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये इस एक्ट की वजह से इसको मजदूरी ना आती तो ये कौन कौन सी जॉब्स कर सकता था, और ये जो जॉब कर रहा था अगर यही करता रहता तो अगर ये प्रमोट भी हो जाता तो इसको कितनी सैलरी मिलती. ठीक है. वो तक भी कैलकुलेट किए जाते. ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्लेम कि आप उसको एस्टेब्लिश कैसे करते हैं. तो क्या expressly prohibited acts. There is a further complication where the employer is doing something specifically forbidden by the employer. The outcome is then said to be depend on whether the prohibition limited the sphere of employment, in which case the employer is not in the course of employment, or limited in the manner in which the employee carry out duties, in which case the employee is still in the course of employment. An act may be within the course of employment even though it has been expressly forbidden by the employer. Olympus versus London General Omnibus Company, bus driver was instructed not to race with or obstruct the buses of rival companies. He disobeyed these instructions and caused an accident in which the plaintiff horse were injured. Despite the prohibition, the employers were liable since it was simply an improper method adopted by the employee in performing his duty. अब इसमें एम्प्लॉयर इसलिए लाइबल है क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल है हर उस इलीगल एक्ट का जो उसका एम्प्लॉय करेगा.
ठीक है, बेशक उन्होंने उसको मना किया हो, लेकिन दे हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसा एक्ट उनका एम्प्लॉय ना करे जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। Slide. In Rose versus Plenty, the employer was liable when, despite his employer's express instructions not to do so, a milkman employed a boy aged 13 to help him on his milk round. Due mainly to the milkman's negligent driving, the boy was injured. In the Court of Appeal, Lord Denning said that the driver was still within the course of employment despite the express prohibition because he was still acting for the master purpose, business and benefit. ठीक हो गया जी? Deliberate or criminal acts. In the cases considered so far, the employee had committed the tort of negligence. It is, however, more difficult to apply vicarious liability where the employer has deliberately caused the damage to the claimant and or the employee is guilty of a crime. How can such activities be in the course of employment? Using the orthodox test, the courts did impose vicarious liability where the employer was acting for the benefit of the employer. Example, by assaulting a suspected thief, ठीक है, or stole property that he was employed to clean. In Morris versus C.W. Martin and Son Limited, a mink stole which was sent for dry cleaning was stolen by one of the employees in the firm of cleaners. The employer was vicariously liable for the theft because the employee's act constituted an unlawful mode of doing his job. समझ गए? See Poland versus Parr and Sons, Lloyd versus Grace, Smith and Co., in Warren versus Henley Limited, the employer was not held liable for a violent assault by a pump attendant because, on the facts, the attack was found to be a mere act of personal vengeance and outside the course of employment. ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर क्यों लाइबल नहीं हुआ पंप अटेंडेंट के वायलेंट एक्ट या क्रिमिनल एक्ट के लिए? उसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला कि उसका जो उनके ऊपर अटैक था वो उसका पर्सनल ग्रज था उनके साथ, उस एम्प्लॉय का उनके साथ पर्सनल उसकी एनिमिटी थी जिसकी बेस पे था। और दूसरा ये कि वो जिस टाइम उसने उन पर अटैक किया या उनके अगेंस्ट उसने वो वायलेंट एक्ट किया, ठीक है, उस टाइम वो ऑन ड्यूटी नहीं, ठीक है, इन दो वजूहत की बिना पे एम्प्लॉयर लाइबल नहीं। The limits of the Salmon test were reached in a case where a deputy headmaster sexually abused a pupil during a school trip to Spain. In Trotman versus North Yorkshire, the test was applied in the case of teacher who used school trips to commit sexual assault on a dependent child. It is difficult to describe such conduct as an unauthorized mode of carrying out the deputy headmaster duty. The Court of Appeal refused to hold the employer vicariously liable on the ground that the perpetrator was not acting in the course of employment. His conduct was said to be a negation of the task of caring for the plaintiff and not an unauthorized mode of carrying out an authorized task. This case has now been overruled by the House of Lords. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह overruled हो गया, नहीं तो यूं डिप्टी हेडमास्टर था जो ट्रिप लेके जाता था और वो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता था। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि स्कूल जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो उसका एक्ट है उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो अगर उनको लेकर जाता था या इस तरह के मामलात करता था
तो इसमें वो तो अपनी ड्यूटी की निगेशन कर रहा था। उसका का तो काम था उनको प्रोटेक्ट करना, और उसको हायर इसलिए किया गया था कि उनकी प्रोटेक्शन करे। ठीक है, तो वो तो अपने टास्क के अगेंस्ट ही जा रहा था। तो इसमें तो एम्प्लॉयर जो है वो लायबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी जुमला पढ़ के मुझे थोड़ा सा सुकून हो गया, क्योंकि ये केस जो है हाउस ऑफ लॉर्ड ने ओवर रूल कर दिया था। ठीक हो गया जी। In Lister versus Hesley, the Lister test. In Lister versus Hesley Hall Limited, the House of Lords reviewed the application of Salmon test, which focused on whether the employee's wrongful act was either authorized by the employer or an improper way of doing that was authorized. It was held that in cases of serious criminal conduct, the proper method of determining course of employment. The proper method of determining course of employment is not to ask the simplistic question of whether the acts were mode of doing authorized acts, but to adopt a broad approach to the question of the scope and employee's employment. Here, the warden of residential school for children, who had some years after the events been convicted of sexual assault on people in his care, was acting in the course of employment so as to make his employer vicariously liable. ठीक हो गया जी। With the benefit of influential Canadian jurisprudence on the subject, the law lords focused on the close connection between the acts of the warden and the job he was employed to do. The defendant has entrusted the care of the children to the warden, and the abuse had been inextricably interwoven with the carrying out of his duty. His thoughts had been so closely connected with his employment that it would be fair and just to hold the defendants vicariously liable. ठीक है जी। अब ये जो हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी निगेशन में ये प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है। A number of judges noted that the warden was very person selected to discharge the employers on personal responsibility to the। ठीक है, समझ आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में सिनेरियो ये था कि वो रेजिडेंस स्कूल था जो बच्चों को रेजिडेंस प्रोवाइड करता था। एक मिनट, नहीं, एक मिनट से स्कूल। ठीक है, स्कूल है। हाँ, वो आप वही कंसिडर कर लेना, तो हॉस्पिटल टाइप होता है। ठीक है, तो स्कूल जो है वो रेजिडेंस प्रोवाइड करता था बच्चों को, और उनके लिए इन्होंने वार्डन एक रखा हुआ था जिसके ऊपर केसेस थे सेक्सुअली अब्यूज करने के बच्चों को। ठीक है, तो उसने बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया और क्लेमेंट ने उसके अगेंस्ट क्लेम किया टॉर्ट में। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो एम्प्लॉयर है वो भी लाइबल है उस वार्डन के एक्ट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर ने हायर किया है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर उस वार्डन को हायर किया हुआ है, तो वो जो उनकी बच्चों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए या उनको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, वो काम है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर लाइबल है कि वो उनकी सेफ्टी इंश्योर करे या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे या उनको फैसिलिटेट करे, और जो वार्डन है वो अपने एम्प्लॉयर की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। समझ आई बात की भाई? सीन तो यही होता है ना, जैसे अब इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जुनेद साहब इसके ऑनर है। ठीक है, और जुनेद साहब ने हम लोगों को हायर किया हुआ है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हम जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्यूटीज जो हैं वो जुनेद साहब की ड्यूटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, उनकी ड्यूटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम क्या है? उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, उन्होंने आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है,
वो एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका काम है और हम उनको असिस्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह इन्होंने जो स्कूल वार्डन हायर किया हुआ है, ठीक है, उसका काम है वो सारी चीजें प्रोवाइड करना जो वहां का ऑनर उनको प्रोवाइड करेगा। वो जो वार्डन ड्यूटीज परफॉर्म करेगी वो ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रही है जो उसकी एम्प्लॉयर की ड्यूटीज है, ठीक है। तो जो एक्ट उसने किया उसके लिए उसका जो एम्प्लॉयर है वो वाइकेरियसली लायबल है। जी, ऐसे मानो। देखें, वाइकेरियसली लायबल तो ऐसे ही होगा, लेकिन वो मेक श्योर तो करेगा कि ऐसा काम ना हो। ये 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 यही चीज मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। देखो, ये चीज अभी बड़े देर बाद आपने ये सवाल उठाया जाके, कि शुरू से मैं ये चीजें एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। देखें, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि जब वो किसी को हायर करेगा तो ही हैज टू मेक श्योर कि उसके ऐसा कोई एक्ट ना हो या उसके अंदर ऐसी कोई हैबिट्स ना हो जो किसी दूसरे एम्प्लॉय को डैमेज कर सकती, ठीक है। उसमें हमने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी कि सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, वर्क प्लेस जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो एक जो एनवायरनमेंट है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, वो भी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई दूसरा बंदा जो है वहाँ पे उस एम्प्लॉय की एक्ट की वजह से, जिसको एम्प्लॉयर जो है वो नेग्लिजेंटली फेल रहा उसको फुलफिल करने के लिए, और उसका एम्प्लॉय जो है वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाता है, तो हायरिंग तो उस एम्प्लॉय ने नहीं की, ठीक है। उसका कोलीग तो उस एम्प्लॉय ने अपने अपना कोलीग खुद तो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। जो अथॉरिटी है उसको उस इंस्टीट्यूशन में इंगेज करने वाली, आप नहीं समझते कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? अगर उसकी आप देखें, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दानिश बनाएंगे तब ही तो जाके आप इस चीज को मेक श्योर कर सकेंगे कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड। लेट सपोज वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, वो वहाँ पे टीचर्स ऐसे हायर करते हैं जिनको पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। तो क्या आप प्रिंसिपल को इसके लिए लायबल डिक्लेयर नहीं करेंगे कि जब आप टीचर्स हायर कर रहे थे तो आपको उनकी डिग्रीज देखनी चाहिए थी? अब एक जगह पे स्टडीज हो रही हैं इंटर की, वहाँ पे टीचर अगर आप मैट्रिकुलेशन वाला हायर कर लें तो आपको क्या लगता है कि वो परफॉर्म कर पाएगा वहाँ पे? ठीक है। तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होगी तो उससे जो स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, उसके लिए आप सिर्फ ये कहेंगे इस टीचर को डिक्लेयर करो लाइबल क्योंकि ये मैट्रिक था, इसने गलती की है, ठीक है, लिहाजा इस टीचर को लाइबल डिक्लेयर करो, प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहना क्योंकि प्रिंसिपल का कोई कसूर नहीं है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर प्रिंसिपल आप सेटल डाउन ना करें, इसमें तो बार बार हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना कि इनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा, इसमें आप समझें कि हेयर लाइन डिफरेंस आ जाता है बाज मौकों में, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि फिर इन एक्चुअल में आपको बताऊं सिनेरियो क्या होता है। जिसके पास अच्छा वकील होता है वो केस जीत सकता है, लेट सपोज, या किसी के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस है तो वो केस जीत, इन एक्चुअल जो है वो ये सिनेरियो होता है। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या एम्प्लॉयर लायबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे किसी स्टेज पे जाके वो उसको लायबल डिक्लेयर कर रहे हैं और बाज औकात ऐसा भी होता है कि वो नहीं लायबल डिक्लेयर। अब स्कूल वार्डन जो है वो जो एक बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए हायर किया जा रहा है, तो क्या स्कूल की अथॉरिटी नहीं है कोई इस चीज को मेक श्योर करे कि वो बच्चे जो हैं वो सेफ एनवायरनमेंट में हो? और वार्डन जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है उनकी सेफ्टी की
या उनकी को फैसिलिटेट करने की, वो ड्यूटीज किसकी हैं? स्कूल की हैं। वो स्कूल ओन करता है ना ड्यूटीज। वार्डन मीन्स वार्डन एम्प्लॉय है वहां पे, और एम्प्लॉय जो है उसका काम ही होता है मालिक का काम आसान करना। ठीक है, तो मतलब वार्डन जो ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई ड्यूटीज डिस्चार्ज की जाती हैं तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर हो रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर है, आपको नहीं लगता कि उसको लाइबल डिक्लेयर करना चाहिए इस सिनेरियो में? देखें, अगर आप ये प्रिंसिपल, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये प्रिंसिपल सेटल डाउन कर, देखें लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, हमेशा याद रखना। लॉ जो है ना एज अ होल सोसाइटी जो है ना उस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लॉज में आप ये कैसे स्पेसिफाई कर सकेंगे यार ये वाला जो एम्प्लॉयर है ना इसकी गलती नहीं थी, इसने हायरिंग ठीक की थी, बंदा गलत निकला है। ये वाला जो एम्प्लॉयर है ना इसकी गलती थी, इसने जानबूझ के गंदा बंदा जो है वो हायर किया था। इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल बनाते हैं। एक्सेप्शंस होती हैं उन प्रिंसिपल्स की, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल है वो, दैट रिमेन्स ऑलवेज सेम। ठीक है, आप इसको बिल्कुल रिजिडली ना लेके चले ना कि यार इसके अगेंस्ट तो फिर हो ही कुछ नहीं सकता। उसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर को उन्होंने लाइबल डिक्लेयर नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ जनरल प्रिंसिपल यही होगा दैट द एम्प्लॉयर वुड बी लाइबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट और टॉर्ट कमिटेड बाय हिज एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय, and the most important thing is that that the tort would be committed at the workplace or during the course of employment। ये चीजें स्पेसिफाई कर दी ना, इसको बेलगाम तो नहीं छोड़ा ना कि हर टाइम जो है वो एम्प्लॉयर लाइबल होगा। ठीक है, तो स्पेसिफाई करने का जो बेसिक एम है वो यही है कि जो इस तरह की वेग सिचुएशंस हैं उनको जो है आप रेक्टिफाई कर सकें। अंडरस्टैंड? अब तो नहीं है मसला, अब एम्प्लॉयर के साथ हमदर्दियां तो बाकी ही हैं, खत्म हो गई। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, थॉट लॉ पाकिस्तान में भी है, एप्लीकेबिलिटी नहीं है उसको ना। ठीक है, लेकिन वो उसकी मेन रीजन ये है कि यहाँ पे एक तो लोग टॉट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी, लोगों को नो हाउ नहीं है तो उनके राइट्स क्या हैं। बेसिक राइट्स नहीं पता होते तो टॉट तो उसके बाद की सब कैटेगरी है। लोगों को बेसिक राइट नहीं पता कि उन्होंने कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, application of close connection test, which employees might fall within the listed test. First, there are some dicta in the case itself. In particular, it was said that there would be no vicarious liability if the abuse had been perpetrated by a caretaker or handyman at the school whose duties involve looking after the property rather than the goods. ठीक है, the scope of lister has been considered in the following cases। ठीक हो गया जी। अब इसमें ये बात कर रहा है कि क्लोज कनेक्शन टेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कैसे होगी। ठीक है, अब एक बंदा जो स्कूल में एम्प्लॉय उन्होंने हायर किया है, उसका काम है बिल्डिंग की सेफ्टी या बिल्डिंग की प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कैसे आप उसका कनेक्शन जो है उस बिल्डिंग में जो रहने वाले हैं उनको अगर वो हरास करता है या उनको अब्यूज करता है तो उसके साथ कैसे कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे। क्लोज कनेक्शन टेस्ट की बात हो रही है। थोड़ा सा ना दानिश हमारे मैं इसलिए अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में ना बड़ा कम जेन के साथ मैं चीज़ें देख रहा था, कंफ्यूजन हो जाती है। वो चीज़ मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, जनरल पर्सपेक्टिव में भी।
क्लोज कनेक्शन की बात हो रही है। क्लोज कनेक्शन, अब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो अब हमने ये देखना है कि जो एम्प्लॉय का एक्ट है, ठीक है, और उसका जो डेजिग्नेटेड ड्यूटीज है एम्प्लॉय की, उसके एक्ट के साथ उस ड्यूटी का कितना क्लोज कनेक्शन है कि आप एम्प्लॉयर को लायबल डिक्लेयर करें। जैसे पहले वार्डन है, वार्डन तो बिल्डिंग के अंदर अंदर होता है, ठीक है, उसका काम होता है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना या डिसिप्लिन मेंटेन करना। अब एक जो वॉचमैन है वो तो बिल्डिंग के बाहर होगा, तो वार्डन का एम्प्लॉयर के साथ ज्यादा क्लोज कनेक्शन होगा इन विद रिगार्ड्स टू टॉर्ट, अगर वो कोई टॉर्ट कमिट करता है, या वॉचमैन का ज्यादा क्लोज कनेक्शन होगा एम्प्लॉयर के साथ। कैसे? डेजिग्नेशन बताओ दोनों का क्या है। डेजिग्नेशन एज्यूम करो, एक बंदा बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है, और वो उसका इंटरेक्शन भी है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, और एक बंदा बिल्डिंग के बाहर है तो किसका ज्यादा क्लोज कनेक्शन है? अगर कोई टॉर्ट, दोनों, एक टॉर्ट कमिट करता है वॉचमैन, उसके लिए एम्प्लॉयर को लायबल डिक्लेयर करेंगे, या जो टॉर्ट बिल्डिंग के अंदर कमिट किया कर रहा है वार्डन, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर के साथ क्लोज कनेक्शन होगा। देखिए, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी किस सिनेरियो में ज्यादा ठीक ठीक है जी। The scope of Lister has been considered in the following cases: in Dubai Aluminium Company Limited versus Salam, the principle in Lister was extended to include not just intentional torts but also breaches of equitable duty, which were closely connected with the acts that the employee was authorized to do in the course of the firm's business. ठीक हो गया जी। Reflecting the policy factors which influenced the decision in Lister, Lord Nichols noted, whether an act or omission was done in the ordinary course of a firm's business cannot be decided simply by considering whether the partner was authorized by his co-partners to do the very act he did. The reason for this lies in the legal policy underlying vicarious liability. The underlying legal policy is based on the recognition that carrying on a business enterprise necessarily involves risk to others. It involves the risk that others will be harmed by the wrongful act committed by the agents through whom the business is carried on. ठीक है जी। When those risks ripen into loss, it is just that the business should be responsible for compensating the person who has been wronged. ठीक हो गया जी। कोई भी एक्ट ऐसा जो एम्प्लॉय कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कोई ऐसा एक्ट जो उसको ऑथराइज किया गया है मालिकान की तरफ से, या वो एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है बिजनेस के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, अगर उसके उस एक्ट की वजह से किसी को कोई लॉस सफर होता है, उसके लिए जो एम्प्लॉयर है दैट वुड बी वाइकेरियसली लायबल फॉर दैट एक्ट। ठीक हो गया जी। हाँ। नहीं, वाइकेरियसली लायबल, लायबल वो एम्प्लॉय होगा जिसकी वजह से कोई दूसरा बंदा लॉस सफर करे, वो डायरेक्टली लायबल है, ठीक है, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है। जो वाइकेरियस लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है। समझ गए बात को? लिस्टर वॉज अप्लाइड, देखें इसमें जो एम्प्लॉयर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है ना दानिश, वो ये है कि उसने जैसे कोई काम करना है, उसके लिए उसने प्रॉपर गैजेट्स और टूल्स प्रोवाइड करने हैं एम्प्लॉय को, ठीक है। अब वो उसमें चीज़ें जो है वो घटिया प्रोवाइड करेगा उसको, तो वो हाँ, और उसकी वजह से अगर एम्प्लॉय जो है वो सफ़र करता है कोई लॉस,
तो उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। जहाँ पे उसका एम्प्लॉय, उसका एजेंट या उसका कॉन्ट्रैक्टर उसके एम्प्लॉय को कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगा तो दोनों ही एम्प्लॉय हो गए ना। जो उसका दूसरा एम्प्लॉय होगा वो भी उसका एम्प्लॉय, मतलब कोलीग है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो ड्यूटी ऐसी डिस्चार्ज कर रहा है जो इस चीज को एस्टेब्लिश कर रही है कि ये उसी के अंडर फॉल कर रहा है। उस उसमें भी कोई एजेंट है जो बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उसके लिए परफॉर्म कर रहा है, वो होगा, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, एजेंट है, या कोई भी कोलीग है, ठीक है, वो जो जो भी एक्ट करेगा उसके लिए वो वाइकेरियसली लाइबल है। जो डायरेक्ट एक्ट है ना उसका, उसके लिए तो वो प्राइमरी लाइबिलिटी है उसकी। जो उसका इनडायरेक्ट एक्ट होगा, मतलब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा किसी इशू में, तो वो उसका वाइकेरियस उसकी लाइबिलिटी एक्रू करवाएगा। ठीक हो गया। Lister was applied by the Court of Appeal in Mattis versus Pollock, where the owner of a nightclub was vicariously liable when Mattis, the claimant, was rendered paraplegic following a stabbing by a Cranston, a bouncer employed by the club. The evidence showed that Cranston had a history of behaving aggressively and the act was one of revenge. ठीक हो गया। उसने उसको स्टैब किया, एक क्लेमेंट को। क्लेमेंट जो है वो कस्टमर था एक नाइट क्लब के अंदर। उसमें एक बाउंसर उन्होंने रखा था। बाउंसर का पता है ना, जो क्लेम वो क्लब्स की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जायंट्स हायर किए होते हैं, ठीक है, जो उन्होंने पीस मेंटेन करना होता है क्लब में। और उसने जो बंदा हायर किया हुआ था उसने किसी कस्टमर को स्टैब किया, ठीक है, तो उसमें जो उसका ऑनर है वो भी वाइकेरियसली लाइबल है, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो अदरवाइज भी एग्रेशन वाली थी। जी, ठीक है जी। लॉर्ड एलजे said at the essential principle were derived from the reasoning in the Lister and Dubai aluminium cases is that Mr. Pollock's vicarious liability to Mr. Mattis for Cranston attack requires a deceptively simple question to be answered. Approaching the matter broadly, was the assault so closely connected with what Mr. Pollock authorized or expected for Cranston in the performance of his employment as doorman at his nightclub, that it would be fair and just to conclude that Mr. Pollock is vicariously liable for the damage Mr. Mattis sustained when Cranston stabbed him. ठीक हो गया जी। In CCWS, the Supreme Court considered the criteria that established the necessary close connection between relationship and abuse. Lord Phillips Lord Phillips identified a common theme emerging from the authorities in the UK, Canada, and Australia. Starting with the Canadian authorities, a common theme can be traced to most of the cases to which I have referred. Vicarious liability is imposed where a defendant whose relationship with the abuser put in a question to use the abuser to carry on its business or to further its own interest has done so in a manner which has created a significantly enhanced the risk that the victim or victim would suffer the relevant abuse. The essential closeness of connection between the relationship between the defendant and the tortfeasor and the acts of abuse thus involves a strong causative link. ठीक है, जो हमने चीजें डिस्कस की पहले भी, जो आप पूछ रहे थे मुझसे सवाल किया था उसमें, उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया थ्रू जजमेंट्स ऑफ कनाडा, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा
कि जहां पे एम्प्लॉय ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है जो एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए है और एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया है उन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, उस दौरान अगर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी भी विक्टिम या विक्टिम्स को इंजरी सफर होती है या वो किसी पॉइंट में सफर करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से, ठीक है, उसके लिए वो एम्प्लॉयर जो है वो वाइकेरियसली लायबल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक हो गया सब जगह पे। मतलब ये तीन, वैसे तो ये कैनेडियन अथॉरिटीज की बात कर रहा है, लेकिन उसमें स्टार्ट इससे पिछली लाइन में हमने पढ़ा है कि यूके, कैनेडियन और तीसरी कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज। अथॉरिटी का वर्ड अक्सर यूज किया जाता है जहाँ पे आप उनकी केसेस को रेफर कर रहे होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पे उनको रेफर कर रहे होते हैं वहाँ पे अथॉरिटीज की टर्म भी यूज। ठीक है जी। However, in Muhammad versus W.M. Morrison supermarkets, vicarious liability for an employee's attack on a customer at a petrol station was considered by the Supreme Court. The claimant was first racially abused verbally in the petrol station kiosk and then physically attacked by the employee who had followed him to his car. The Court of Appeal's conclusion that the employee's attack was personally motivated and had nothing to do with the employment was unanimously rejected by the Supreme Court, where the Lord Tilson said that the employees' motives were neither here nor there. The employee's job was to attend to customers, and his conduct in answering the claimant's request was inexcusable, but fell within the field of activities assigned to him. ठीक हो गया जी? हाँ, और उसको उन्होंने लाइबल डिक्लेयर किया था। नहीं, एक्चुअल में आपको बताऊं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोर्ट्स अपना माइंड अप्लाई करती हैं इन चीज़ों को डिसाइड करने में, लेकिन इन एक्चुअल आप देखेंगे ना तो आप अपना क्लेम कितना अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और कोर्ट पे बाउंड है, जहाँ पे आप लीगली कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, कोई नया रास्ता दिखा रहे हैं तो कोर्ट बाउंड है उसको फॉलो करने की। कोर्ट लॉ को तो नहीं छोड़ के भाग सकती है। ठीक हो गया। The modern law on vicarious liability established by the Supreme Court in CCWS and expanded by the decision in Cox, Muhammad and Ang enable the increasing range of claimants to benefit from the doctrine's liability to act as a loss distribution device. ठीक है। In arms, the majority of Supreme Court applied the policy reasons set out by the Lord Phillips in CCWS, and ruling is likely to pave the way for continued extension of vicarious liability। ठीक हो गया जी। उन्होंने उसका जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट किया और उसने जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको मजीद डेवलप कर दिया और एनहेंस। ठीक हो गया जी, इन केसेस के को मद्देनजर रखते हुए listed JGE and various claimants all involved victims of sexual abuse seeking recompense from the institution responsible for the abuse in question. What is distinctive about Cox and Muhammad, however, is that these are not sexual abuse, but example of traditional vicarious liability scenarios in which the question is whether an employment relationship exists or whether the misconduct of the employer takes him outside the scope of his employment. The Supreme Court rulings are therefore significant in indicating that sexual abuse cases are not separate category of claims
The extension of vicarious liability to meet the facts of Lister, JGE, and various claimants applies generally to all cases. The societal need to respond to sexual abuse scandal has therefore had a permanent impact on the shaping of the modern doctrine of vicarious liability. अच्छा जी, जो पहले 3 केसेस इन्होंने डिस्कस किए हैं ना, लिस्टेड, जेजी एंड वेरियस क्लेमेंट्स वाले, ठीक है, इसमें और जो बाकी दूसरे केसेस हैं, कॉक्स हो गया, मोहम्मद हो गया, इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेक्सुअल अब्यूज का, ठीक है। लेकिन कोर्ट्स फर्दर इसमें प्रिंसिपल एलेबोरेट करते हुए एक्सप्लेन कर रही हैं कि जहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात हो रही होगी, वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस और दूसरे केसेस में को डिसाइड करते हुए ये डिफरेंस नहीं देखा जाएगा कि ये वो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस थे तो उसमें वो वाइकेरियसली लाइबल हुए, ये सेक्सुअल अब्यूज का केस नहीं है तो इसमें वो वाइकेरियसली लाइबल नहीं हो सकते। प्रिंसिपल जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का है, दैट इटसेल्फ इज कंसिस्टेंट और वो एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। दैट हैज नथिंग टू डू विद सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक हो गया जी। बेसिक एम जो है वो इनका ये है, द एक्सटेंशन ऑफ vicarious liability to meet the facts of listed JG and various claimants applies generally all cases, ठीक हो गया जी। The societal need to respond to sexual abuse scandal has therefore had a permanent impact on the shaping of the modern doctrine of vicarious liability. लेकिन जो societal need है towards sexual abuse cases, वो हेल्प आउट कर रही है vicarious liability की कॉन्सेप्ट को शेप आउट करने में, ठीक हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने में उसमें हेल्प आउट कर रही है उसको, ठीक हो गया जी। WM Morrison Supermarkets PLC Limited PLC versus various claimants. In 2018, the Court of Appeal ruled that Morrison Supermarket was vicariously liable for a serious data breach caused by the deliberate malicious act of an employee. In pursuit of personal grievance, a senior internal IT auditor at Morrison had downloaded the personal data of some 1 lakh employees and shared them, including to 3 national newspapers. He was sentenced to 8 years imprisonment for fraud and statutory offences. Some 5,000 of the victims brought an action against their employers as vicariously liable for breach of Data Protection Act, breach of confidence and misuse of privacy information. ठीक हो गया जी। जिस बंदे ने ये काम किया था उसको तो 8 साल की कैद होगी, ठीक है। 1 लाख बंदों का उसने डाटाबेस से डाटा लीक किया, ठीक है, और जिसमें जो है 3 नेशनल न्यूज़पेपर्स का भी डाटा था, ठीक हो गया। और जो 5,000 के लगभग लोग हैं ना, उन्होंने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट भी केस किया कि दैट द एम्प्लॉयर इज वाइकेरियसली लायबल फॉर द ब्रीच done by his employee under the Data Protection Act 1998 for breach of confidence and misuse of private information. And WM Morrison Supermarket PLC versus various claimants सब समझ आ रही है कि क्यों इसका नाम दिया है, क्योंकि इसमें 1 लाख लोग इन्वॉल्व थे और 5,000 के लगभग लोगों ने वाइकेरियसली लाइबिलिटी का केस किया हुआ था, ठीक है जी। The Supreme Court overruled the Court of Appeal in more conservative interpretation of the close connection limb of two-stage test for establishing vicarious liability was that employers will not be liable for an employee's wrongful act where that act is not engaged in furthering the employer business. Here, the employee's activity was an effort to deliberately harm his employer as a part of personal vendetta. Consequently, no vicarious liability arose. ठीक है। अब इसमें चेंज क्या है दानिश में, इसमें चेंज ये है कि वो जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था, हमने ऊपर एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए कर रहा है,
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इस पॉइंट, डिस्टिंग्विश इस पॉइंट पे आप डिस्क्रिमिनेशन इसको केस को डिस्टिंग्विश इस पॉइंट पे कर सकते हैं कि जो एक्ट उसके एम्प्लॉय ने किया है उसने एम्प्लॉयर के बिजनेस को लॉस पहुंचाया है, ठीक है, और उसने जो वो एक्ट किया है वो अपने एम्प्लॉयर से पर्सनल वेंडेटा की बेस पे किया, मतलब उसका पर्सनल ग्रज था उसके साथ और वो चाहता था कि इसको लॉस पहुंचे, इसलिए उसने वो डाटा लीक किया। तो लिहाजा एम्प्लॉयर जो है वाइकेरियसली लायबल नहीं डिक्लेयर होगा। अब हम जब बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई करें तो एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल बनता है, जनरल प्रिंसिपल है। तो मैंने आपको क्वेश्चन वो एड्रेस किया इस पॉइंट पे जो आप पूछ रहे थे कि सर कैसे हो सकता है, तो ये उसकी एग्जेम्पशन है, सॉरी एक्सेप्शन है, जहां पे एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल नहीं है। ठीक है जी, फर्दर है जी बेलमैन वर्सेस नॉर्थम्पटन रिक्रूटमेंट। Bellman, the generous judicial trend in vicarious liability persisted in the case of an after party following the annual Christmas get together. Here, after consuming considerable amount of liquid seasonal cheer, the managing director got into an argument over a workplace issue and ended up in punching his employee who suffered serious brain damage and brought an action based on vicarious liability, overturning overturning a first instance decision in favor of the defendants. Lady Justice Arden examined the overall context. Although the attack took place at different venue than the official office party, where there was a sufficient connection between the wrongdoer position as the most senior employee in the company and the nature of the dispute would render the assault as being within the course of employment. It can be suggested that Bellman is not perhaps at the outer boundary of vicarious liability, a position borne out by the recent decision of the Supreme Court in Barclays Bank and Morrison Supermarket. ठीक हो गया जी। The employee's position. We have seen that even though the employer is vicariously liable, the employer also remains liable. Vicarious liability is not a kind of defense that enables a wrongdoing employer to transfer liability to the employer. Indeed, the employer is entitled to recover from the employee the amount of any damaging paid to the claimant. समझ आई? एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि जिस एम्प्लॉय की वजह से दूसरे एम्प्लॉय ने लॉस सफर किया और उस एम्प्लॉय के एक्ट की वजह से दूसरे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को भी वाइकेरियसली लायबल डिक्लेयर किया, तो जो रॉन्ग डूअर था, जो एम्प्लॉय रॉन्ग डूअर था, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देनी पड़ रही है ना दूसरे एम्प्लॉय को जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है, ठीक है, वो उस रॉन्ग डूअर से वो एम्प्लॉयर भी रिकवर कर सकता है। मजा ही बात की। Indeed, the employer is entitled to recover from the employee the amount of any damages paid to the claimant. In Dresser versus Romford Ice and Cold Storage, an employer took his employer's lorry to collect some waste and took his father with him to help. The father was injured. कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक हो गया जी। The father was injured as a result of son's negligence, for which the employer was vicariously liable. The House of Lords held that the employers are obliged by their contract of employment to indemnify their employer against any liability which results from the employer's responsibility for damage caused. However, in England, in the interest of good labor relations,
no such claim for indemnity would be made against an employee in the absence of deliberate wrongdoing. There was a gentleman's agreement after the outcry about the Romford case, in which it was really the employer's insurers and not the employer who pursued the employee, under which liability insurers agreed not to exercise their right except in certain circumstances. The employer is, however, insured, and the effect of the rule, therefore, is that an insurance company is able to recover the amount it has paid under the insurance policy. The insurance companies have entered into an informal agreement not to exercise the rights recognized in the Romford case.